एक सर क्वेश्चन ये कर रहा हूँ ना सर। तो लाइक आई एम प्रिपेयरिंग इन ऑफलाइन, मतलब पेन पेपर में बना रहा हूँ सर। तो जैसे आज क्वेश्चन लिखा, उसका कुछ मैंने आंसर लिखा, फिर 2-3 दिन बाद क्या होता है सर कि नहीं यार ये नहीं, इसकी जगह कुछ और लिखते हैं। तो मतलब काइंड ऑफ सर वो हौश पौश हो रहा है। और मैंने ऑनलाइन में कैन यू ट्राई बी अ किया लिटिल सर, मोर बट लाउड? ऑनलाइन में क्या होता है वो। ओके ओके। या एम आई क्लियर नाउ? हाँ, you're clear. या बताइए। सर एक्चुअली, हाँ, एक्चुअली व्हाट हैपेंड सर, जो डेस्क के मेरे क्वेश्चंस में बनाया तो आई वाज मेकिंग इन पेन पेपर मोड। तो फॉर एग्जांपल आई मेड अ क्वेश्चन, आई मेड आंसर टुडे, आफ्टर 3-4 days व्हेन आई एम रिविजिटिंग देम, सो आई फाउंड कि नहीं यार और अच्छा हो सकता है। तो सर वो बहुत कट पिट काइंड ऑफ हो रहा है। देन आई ट्राइड इन लाइक एम एस वर्ड, कि एम एस वर्ड, बट सर उसमें उतना वो मैन्युवरेबिलिटी नहीं आता है, क्योंकि आपको लाइक मतलब स्ट्रेट वर्टिकल वर्टिकल लिखते जाओ, जितना हैंड में आपको फ्रीडम रहता है, फ्लो चार्ट एंड ऑल। तो लाइक कैसे टैकल करें, मतलब मेरे को बताओ, लाइक मेरे को बिल्कुल क्लियर नहीं है कि कैसे मैं बस हर अप्रोच एक करूँ क्वेश्चन के लिए इसको। जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए पॉइंटर्स लिख के रख लीजिए, ताकि वो पॉइंटर्स में आप ऐड कर सके। और पॉइंटर्स जो भी आप लिख रहे हैं वो हिंट्स की तरह होना चाहिए, नॉट एज सेंटेंसेस। सेंटेंसेस तो आप खुद कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, लेकिन जो पॉइंटर्स रहेंगे वो आपको याद रहनी चाहिए। और ऐसे पॉइंटर्स रखिए जैसे कि सिर्फ 4 या 5 हो। उसके बाद कुछ और ऐड करना हो तो देख लीजिए कि इसमें से कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स होंगे वो आपको पहला बताना होगा। बस 3-4 काफी होंगे, क्योंकि आपका आंसर बहुत लंबा भी नहीं हो सकता है। सो सर मतलब ओनली द कीवर्ड्स आई नीड टू राइट, दैट टू 4 or 5 कीवर्ड्स फॉर एवरी क्वेश्चन। या या अच्छा, okay sir, this is regarding that. The second thing is that how to approach with this current affairs, like I am in a interview guidance program, तो उनने 3-4 क्लासेस ली, बट वो 3-4 क्लासेस से तो नहीं हो सकता है कुछ, लाइक बेसिक बेसिक उन्होंने थीम्स बता दिया। बट हाउ टू टेक दिस डेली करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर एंड ऑल, आई एम रीडिंग करंट वन अफेयर्स मेरे लाइक हिसाब इंडियन से आई थिंक एक्सप्रेस डेली। यू विल हैव टू प्रिपेयर द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस एवरी डे। आपको दोनों न्यूज़पेपर्स पढ़ना पड़ेगा हर दिन। दैट्स वन। वर्बैटम हर एक लाइन आपको देखना पड़ेगा। सेकेंड थिंग इज यू कैन ऑल्सो डू मंथली करंट अफेयर्स कंपाइलेशंस। जैसे कि आपका इंटरव्यू कब है? सर इट्स इन लास्ट फेब। ओके, तो आप जैन फेब और दिसंबर का जितना हो सके आप कर लीजिए। करंट अफेयर्स कंपाइलेशन करेंगे तो ठीक रहेगा। Acha, okay. And sir, one more thing, sir. Actually, I am getting doubt in choosing the color of my blazer. Like I have one a very dark gray, light gray, and there is one middle of both light and dark, but it has sir some kind of checks. Matlab, although it's not very clearly visible, but one can identify that there are like lining patterns. So, but the color is good. Can I go with this? Matlab, I want your insights on Frankly that, the speaking, blazer I color. don't think the interview board pays attention to whether it is black or gray or blue, to be honest. As long as it is something which is बिल्कुल very कुछ नहीं। informal, that is when probably it might look हम्म। odd, but otherwise they really don't care about that. अच्छा, सो As इट्स long as नो you're मैटर। presentable, it's more than enough. तो मतलब इट्स ओके इफ सम लाइंस आर देयर, मतलब इट्स नॉट शोइंग टू मच इनफॉर्मेलिटी। कोई नहीं, then it's fine. अच्छा, ओके सर, नाउ इफ पॉसिबल फॉर यू, कैन यू लाइक फ्रॉम माय डेफ, लाइक कैन यू मे बी हैव अ कन्वर्सेशन, और कैन यू पॉइंट आउट लाइक मतलब हाउ टू अप्रोच दैट? Yeah. So I think you will have to start preparing right from the meaning of your name to some national and international events that have happened during your date of birth. ये सब आपको पहले ही देख लेने चाहिए. And then I think there's Narasimhapur and Madhya Pradesh. So when you prepare your home यस सर। district and state, I think it's about focusing more on the pestle approach. जो भी political, economic, social, technological, legal issues होंगे आपके home district and home state के, वो आपको पता होनी है. ओके। And whatever is famous like the geographical indication tags, ये सब आपको पता होनी है about your state. It could be something as यस सर। trivial as state emblem, state animal. वो सब भी आपको देख लेनी चाहिए एक बार at least. Second, सर फॉर Narasimh के बारे में भी डिस्ट्रिक्ट because it's सर Narasimhpur. हाँ sir, बताइए. for information on district, like on internet and Google, limited things are available that too quite outdated. Matlab, they do not reflect today's. Like, can you share a source how I can know more about my district? Like, district gazetteer is One, around. generally the state websites will have some data, and also about the budgets and stuff. It's okay if it's outdated data in the sense census 2011 is the authentic data until date. So you can quote census 2011 and say that this Yes, is the sir. data that is there. It is totally fine because
It's the last authentic government data. अच्छा, okay sir. For district sir, for my particular district. For your district as well. Generally for district also you get PDFs. मिल जाता है वो. अच्छा, That is totally okay. Census का data is there for your district also. उसमें कोई दिक्कत नहीं okay रहेगी. sir. तो So नरसिंहपुर के like, बारे में आपको पता होनी है. do they ask only on, मतलब generally, obviously we can't quantify, like हाँ. regarding these pestle objectives only, na, from our district and state. Yeah. About both the home district and home Like, do state they and ask equal capacities, some, they do ask. Just a moment, just a moment. but only on these dimensions, on pestle? हाँ, sure, sure. Yeah, But not only on just these restricted dimensions, to these dimensions. It can be any dimension generally. that can be asked, Yes, but you yes. will also have to know these dimensions more in depth. That is the difference. Okay, sir. Yeah. हाँ. बाकी आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट और ऑप्शनल आपको मेंस की तरह पढ़ना पड़ेगा, वो डिटेल में आपको पता होनी Hello. है. Okay, sir. सो दैट इज अबाउट एनआईटी में क्या है. सो मौलाना आजाद के बारे में. हाँ, सिविल इंजीनियरिंग किया है तो अबाउट सिविल इंजीनियरिंग एज वेल यू विल हैव टू नो. Adjudged Best Speaker in Model United Nations on Myanmar. तो इंडो म्यांमार रिलेशंस, यूएन के बारे में, एंड अबाउट एमयूएन, ये तीनों आपको पता होनी है. Okay, sir. एंड UN अबाउट also and स्वामी, MUN. या about Swami Okay. Vivekanand as well, and about Swami Ramakrishna because you mentioned Vivekanand. Then about Okay, sir. e-governance, the debate competition on e-governance. So about that as well. Sir, on e-governance, like on how way? Like e-governance, we prepare for mains Just as like how well. you prepare for the prelims and mains, you will have to know the government schemes, you will have to know the data, you will have to know everything that is related to e-governance. वो सब आपको पता होनी है. Actually, sir, I wrote this. I was just a debater in the debate competition on e-governance. But like, Yeah, if they ask what the title or what's the means title of the debate competition, can you suggest a good title? Like, obviously, e-governance is good. How can we debate both equal-sided? I thought one can be the e-governance is the governance for affluent, signifying the digital divide. Can it go? that's a fair enough topic. I think you can go with that. That should Acha, be okay. 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 Yeah. Baki high jump about NIT Bhopal as well. Okay, sir. फिर horticulture committee, it's about horticulture, Okay. table tennis, and terrace gardening. These are the areas. Acha. बाकी तो Sir, DAF is after, perfect. हाँ. हाँ, sir, like for example, लगभग I am preparing this. Like I got some questionnaires from coachings also. So कुछ questions तो उनके बहुत irrelevant है, but जो जो relevant लगे, I prepared the answers and all. Uh, और like daily current affairs I am going with. So मेरे को अब फिर mock देना कब start करना चाहिए? You can give it as soon as possible. You just have to keep prepping and keep giving mocks. Take mocks more for the new questions that you come across and not really about the feedback. Take every feedback with a pinch of salt. It is more for the new questions that you come across and the refinement in your answers. Okay. So like I need to prepare my depth. I need to be thorough with the current affairs, and Yeah. like that's all, na? Third is about mocks. Fourth, it is about also knowing a little about different interview boards. जैसे कि Shukla sir and Dasa sir have a Twitter page, which I think you should definitely look up across, and also certain podcasts that they've put up. So I think this you should Raj know. Shukla sir. Okay, sir. हाँ, and सर Dasa sir. इन दोनों के बाकी सर मैं about फॉलो every करता interview हूँ. board, सर इन दोनों के मैं फॉलो करता हूँ, राज yeah. शुक्ला सर, दिनेश बाकी दादा about, सर. हाँ, बाकियों के बताइए सर, कहाँ से लाऊं मैं हाँ इन्फॉर्मेशन? बताइए. बाकी आप गूगल करेंगे तो मिल जाएगा. यूपीएससी वेबसाइट हैज अ बायोडेटा अबाउट एवरीवन. तो दैट विल सफाइस, मतलब वो जो एक पेज का पीडीएफ दिया रहता है बायोडेटा का, कुछ कुछ कीवर्ड्स रहते हैं, दैट विल सफाइस. वो काफी है टू नो दैट एरियाज. हाँ, तो ये तो देखनी जो है आपको. तो जो बाकी, बोर्ड में, हाँ सर. हाँ हाँ हाँ, बोलिए सर आप. बताइए. मैं ये बोल रहा हूँ सर, लाइक जो बोर्ड्स फॉर एग्जांपल सुमन शर्मा आई मैम का है, तो थिंक योर वीडियो स्टार्ट. सॉरी. फॉर एग्जांपल सुमन शर्मा मैम के बायोडेटा में लिखा हुआ है कि फॉरेन ट्रेड में शी हैड बीन वर्कड
एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट सोलर एनर्जी में और वो रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत इंटरेस्टेड रहती हैं। तो लाइक जो उनके बोर्ड के कीवर्ड्स लिखे हैं दैट आल्सो वी शुड प्रिपेयर। Know those areas a little in depth because those are questions that they can ask you. You never know. It's based on luck. एंड सर लास्ट क्वेश्चन है मेरा, एक चीज बताइए सर, लाइक फॉर एग्जांपल आई एम रीडिंग द जो ट्रांसक्रिप्ट होता है सर, और फिर मैं मॉक इंटरव्यूज भी देखा बहुत सारों के। फॉर एग्जांपल समवन हु इज स्कोरिंग लाइक 150 160 एंड समवन हु इज स्कोरिंग लाइक 200 205। सर मेरे को तो उनके आंसर लगभग सेम लगते हैं सर, मतलब वो क्या डिफरेंस होता है जो वो एक 40 50 मार्क्स का डिफरेंस बताते हैं, इफ यू कैन That एक्सप्लेन। depends completely on the questions on that particular day. The mocks and everything else doesn't reflect what really they did during the interview. तो मतलब इट्स So I नॉट think that is the मतलब, difference. तो मतलब ये कोई वो चीज नहीं है कि समवन यू कैन प्रैक्टिस एंड गेट बेटर, मतलब इट्स टोटली लक। It is partly luck. It depends on your practice and giving refined answers. So you will have to think on your feet and give your answers. There is a difference between thinking on your feet and thinking prepared before. तो मतलब यू आर सेइंग लाइक वी डिस्कस टू थ्री थिंग्स की डेफ करंट अफेयर्स और बोर्ड्स के बारे में पढ़ना है। तो इफ वी आर मोर प्रिपेयर्ड विद दैट सो वी विल गिव मोर रिफाइंड आंसर, एंड इफ वी प्रिपेयर विद मोर मॉक्स। Definitely. Definitely. Your answers will be more refined. So that's the only way na, or am I missing something? I always think like No. there's a It's about these difference small what. pointers. It's about these small pointers. If there is something from your DAF that is asked and you don't answer, then your mark increase. अच्छा, तो okay sir, that's means that's all I want to ask. Yeah. So Yes sir, these are that some general pointers from my opinion. Baki, it depends on, taking a stand and giving answers. जैसे कि principles of natural justice, constitutional court के judgments, the constitution, ये सब आपको पता होनी है when you give an answer. So whatever for you say example should be more in line with the government of India. sir, for example, in a topic like is places of worship right? So how should we approach? Matlab, should we take the constitutional basis of like Basis of worship sticking with secular? act is very clear. Whatever the law says, that is what should be your stand. Whatever is the So, legal but position if should be your stand. what is the current legal position? Should be our stand. Yeah, absolutely. You can't go against the law of the land. But sir, but if they try to say ki, don't you think it does historical injustices and all? Like, how should we articulate that then? Nothing can contradict the law of the land. That should be your stand. You cannot afford to go against the law of the land and the constitutional court. That is for the court to decide. Acha, okay sir. It is not Okay for sir. one individual or the government even to decide. Even the government is not empowered to do that. The government's actions also Yes are sir. under the court's scrutiny. Yeah, right. Yeah, Okay sir. Thanks a lot. sure. So keep prepping, just follow these pointers and that should help. All the best. Yeah. Thank you sir. Thanks a lot sir. Sure. Thank you.